Dear students and respected viewers, you are welcome to English Language Center. Today, as you know, we have to take the next tense, that is the present continuous. In present simple, we have learned that there are the four structures in the affirmative, interrogative, and then there is the negative and interrogative and negative. In the passive voice, the same as we have done in the previous lecture. Today we have also the four structures. The first is subject is followed by is oblique am oblique are plus verb in form. Then it is pad. Then it is object, and then rest of the sentence. Likewise in the passive voice, we have also in affirmative object followed by is oblique am oblique are, then it is being, then verb third form, then pad, then it is subject, then it is rest of the sentence. Then we go to the next, that is our interrogative, that is oblique am oblique are, then is subject, then is verb in form, then it is pad, then it is object, then it is rest of the sentence. In passive voice interrogative, we have to take all these four auxiliaries outside. Is oblique am oblique are, then it is object, then it is being, then it is verb third form, then it is pad, then it is subject, then rest of the sentence. Then we go to the next, that is negative. In negative, first of all, we have to utilize the subject. It is followed by is oblique am oblique are, then not, then verb in form, then pad, then it is object, then rest of the sentence. Here in negative, we have to utilize first of all object, then it is oblique am oblique are, then not, then it is being, then it is be third, then it is pad, then subject, then rest of the sentence. Then we go to the last one, last structure, that is interrogative plus negative. Is oblique am oblique are, then subject, then not, then verb in form, then pad, then it is object and rest of the sentence. Likewise interrogative plus negative in the passive voice, we utilize object first, then it is oblique am oblique are, then not, then being, verb third form, then it is subject, then rest of the sentence. So, dear viewers and students, today we have taken the present continuous in hand. In present continuous, we utilize the structure. Subject is followed by is oblique am oblique are plus verb in form, then pad, then is object and the rest of the sentence. In the passive voice, we utilize the object first, then auxiliaries is oblique am oblique are, then being, then verb third form, then pad and rest of the sentence. देखो भाई, कल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो ये कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिव वॉइस में भी बोल सकते हैं और कैसे हम पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं। जहां तक आज का ताल्लुक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हर एक जानता है
सब्जेक्ट पहले लाया जाता है, देन अमंग द थ्री ऑक्सिलरीज वन ऑक्सिलरी विल बी यूज्ड हियर, एक ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब इन फॉर्म, उसके बाद प्रपोजन, आर्टिकल और डिटरमिनेंट में से कोई भी आ सकता है, देन इट्स ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं लेक्चर दे रहा हूं तो ट्रांसलेट इसका क्लियर हो जाएगा। आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, आर्टिकल आ गया यहां पर और लेक्चर इसका ऑब्जेक्ट, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेक्चर को पहले लाएंगे, द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड, द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द टीचर, बाय मी, बाय एनीबॉडी एल्स। कमरा मुझसे साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। आगे हम कह सकते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो हम पैसिव वॉइस यहां इसका भी बनाते हैं, ये हमारा एक्टिव साइड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और ये हमारा पैसिव वॉइस है। सिर्फ ये बात हमें अच्छी तरह जहनी नशीन करनी चाहिए कि एक्टिव साइड में हमारा मेन जो कैरेक्टर होता है दैट इज आवर सब्जेक्ट व्हिच इज एक्सेंटेड, जिस पर जोर दिया जाता है। एज फार एज द पैसिव वॉइस इज कंसर्न वी यूटिलाइज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू द ट्रांसलेटिंग पैटर्न, वी आर ट्रांसलेटिंग द थिंग्स, so we must understand what is subject and what is object. As in the part C I have defined what is subject, doer of the action. As far as the passive voice, as far as the object is concerned, over which the work is done, over which the effect of the action is. So in the passive voice we utilize first of all the object. For example, he is breaking the door, he is breaking the door. If we are going to translate in the passive voice, the door is being broken. आगे प्रपोजन आएगी इसकी by him, the door is being broken by him. मैंने इस वक्त आपको कहा था कि if there is I, it will change into me. If there is we, it will change into us, because these are the subjects, these are the objects. If there is you, it will remain you. If there is he, it will change into him. If there is she, it will change into her. If there is it, it will remain in the object, it will remain it. If there is them, they, it will change into them. So we must remember, if there is I, we have to change into the passive voice, it will change into me. So the lecture is delivered, the lecture is being delivered by me. यहां पर हम I को me में बदल देते हैं और यहां पर चूंकि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेता है, that is why इसको हम चेंज करते हैं as object. These are the objects and this is the subject. So subject अगर यहां पर I होगा that will change into me, अगर we होगा that will change into us, अगर you होगा that will remain you, अगर he होगा that will change into him accordingly. So लड़कों को मुझसे सिखाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। The boys are being taught by me, the boys are being taught by the teacher. स्कूल का मायना किया जा रहा है, the school is being inspected by the principal, by the CEO, by director of school education. So this is the affirmative, and now we can go to the interrogative. In interrogative all the three auxiliaries are taken out. Interrogative में हम तीन auxiliaries को बाहर लाते हैं और इस तरीके से हमारा interrogative बन जाता है। Are you working hard? तो यहाँ पर जवाब जो होगा हमारा, जब हम इंटरव्यू में, तो यहाँ पर हम yes का इस्तेमाल करते हैं, yes we are working hard. अगर इससे सवाल किया जाएगा then we have to utilize adverb no. No, we are not working hard. Are you appearing in the examination? Yes, I am appearing in the examination, or we are appearing in the examination according to the question which is being asked to you. यहाँ पर भी मैंने इसका पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया, which is being asked to you. यहाँ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो आपसे पूछा जा रहा है।
तो इस तरीके से हमें एक्टिव साइड को भी सीखना पड़ता है और इसके पैसिव साइड को भी सीखना पड़ता है। लड़कों का इम्तिहान लिया जा रहा है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग, द एग्जामिनेशन इज बीइंग टेकन, द एग्जामिनेशन इज बीइंग टेकन बाय द टीचर। इम्तिहान लिया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, सबक पढ़ा जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है। द लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड, कमरे को साफ किया जा रहा है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। तो यहां पर जब ऐसी सूरत हाल हो, किया जा रहा हो, लिखा जा रहा हो, पिया जा रहा हो, बोला जा रहा हो, देन वी हैव टू यूज द पैसिव वॉइस। अगर ऐसा होगा डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो सीख रहा है, वो खेल रहे हैं, तो यहां एक्टिव साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। दे आर प्लेइंग द गेम, दे आर प्लेइंग द गेम। अगर इसी बात को हम पैसिव में ले लेंगे, खेल खेली जा रही है, द गेम इज बीइंग प्लेड, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, बाय एनीबॉडी एल्स। In this way, we have got the hold over the present simple. Yesterday we have done, today we have done the present continuous. In this way, you can make the 8 sentences in the present, in the present continuous. We can make 8 sentences to every, whatever the verb will be, that should be the transitive verb, because the transitive verb is being changed in the passive voice. Intransitive verb is not changed in the passive voice. And there are some exceptional cases. Otherwise, intransitive verb is not changed in the passive voice. So, transitive verb, we are taking the things about the transitive verb. You must keep in mind. Transitive verbs have been taken under the consideration. We are reading about the transitive verbs. As I have defined that there are 2 kinds of the verbs: finite and infinite. Finite having the 3 kinds: transitive, intransitive, and auxiliary. Infinite having the 3 kinds: infinite, gerund, and participle. We have to learn a lot about the transitive verbs. We have to take hold over it. Okay, tomorrow we go to the perfect, but before going to the perfect, once again I will tell you the present continuous is such verb which is going on, which is under process. जो जा रहा है, जो इस वक्त काम हम कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल जो यूजुअल हो, जो उमूमन हो, जो हर दिन आदमी करे, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब इस्तेमाल किया जाता है व्हेन द वर्ब इज अंडर प्रोसेस। सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं ये कहूंगा कि वो गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग द कार, गाड़ी उससे चलाई जा रही है, द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा is he driving the car, नेगेटिव में हो जाएगा he is not driving the car, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा is he not driving the car, या शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते isn't he driving the car। तो पैसिव वॉइस में चारों विचार ऐसे बन जाएंगे, the car is being driven by him, is the car being driven by him, the car isn't being driven by him, isn't the car being driven by him। What you have to do, you have to take some verbs and you have to practice the things. Today we will explain the next, that is our perfect. Okay, have a good luck to you. Next, tomorrow's class is very very important because we have to take the perfect in hand, that is important. Okay, have a good luck to you.